न्यूयॉर्क में हमने लाइव ट्रेलर शूट किया on Times Square and -5 degrees में. See, I've learned a lot from Paresh Rawal sir. I've done 6 films with him. I've learned one thing from him is attitude is in your work, not in yourself. So my brothers and me, and we've all um, literally sponsored our own education also. We had decided that we will never take a single penny after 10th standard from our parents, and we did not. And one of the films was taken away from me because I'm a martial artist. Hello and welcome to India.com Z. I am Mallika, and today we have a very special guest with us. Somebody who's just not an actor, producer, and interestingly, martial art artist. So, hi Neetu, welcome to India.com Hi. Z. Hi, nice to meet you guys. So, Neetu, firstly, many congratulations on Umrao Jaan Ada. It has received a great response and लोगों को बहुत पसंद आया. So I wanted to ask you one thing that you represented it on a global level. New York में हुआ show, live audience थी. How was it? How was your experience all in all? सबको आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए. और न्यूयॉर्क में हमने लाइव ट्रेलर शूट किया ऑन टाइम स्क्वायर एंड -5 degrees में. लिटरली वहां पे जनता खचाखच भरी हुई थी. तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि वो आफ्टर कोविड, स्पेशली जब लोग जूम कॉल से और गूगल मीट से निकल के बाहर आए हैं, तो एक जो पर्सनल टच होता है विच इज वेरी ओवरवेलमिंग. एंड ऑल्सो 9th of March को हमने प्रीमियर किया था अहमदाबाद में. That was houseful. People have really appreciated our work. And खासकर उमराव जान के जितने दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती, ये गाने हैं. और जो एक स्टोरी है, दूसरे एक्टर्स हैं, खाना मम्मी, पीरू, नवाब साहब, गौहर, मुस्तफा, मतलब एवरी कैरेक्टर इज डन सो वेल. करीबन 15-20 डांसर्स हैं. हमारे जो डायरेक्टर हैं राजीव राजीव गोस्वामी, उनका ये एक विजन था, द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट इट. आई थिंक एवरीथिंग इज कम आउट सो वेल. और वी वर लुकिंग एट कि अच्छा एक एक ग्लोबल लेवल पे इंडिया के आर्ट, म्यूजिक, कल्चर और आइकॉनिक जो कैरेक्टर है उसे प्रेजेंट करना है ऑन स्टेज. सो वेरी एक्साइटिंग, वेरी, matlab it's overwhelming to see such great response. Neetu, since we just said that कि it's a live show, it was a live show, and live show में आपको cut and action का scope बिल्कुल भी नहीं मिलता है. So I believe that rehearsals must have played a very important role, given the fact that you had plenty of dancers with you, and key coordination होना बहुत जरूरी रहा होगा. तो आपकी rehearsals कैसी रही? How long does it used to go for that? मैं करीबन 6-7 महीनों से कथक रियाज कर रही हूँ, 200 घुंघरू बांध के. और अब मेरे पैर में छाले पड़ पड़ के ऊपर पड़ जाते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर पड़ जाते हैं. मतलब मैं भूल गई हूँ कि अभी छाले भी पड़ने वाले, लेकिन अभी भी पड़े हुए हैं मेरे पैरों में छाले. तो लेकिन एक इट्स अ गुड फीलिंग. द फैक्ट कि मुझे ये करने का मौका मिल रहा है, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो 8-8 घंटे के रियाज कर रहे हैं हम लोग, या रिहर्सल्स विद ऑल द एक्टर्स टुगेदर, और डांसर्स एंड एक्टर्स टुगेदर, एंड देन ये सारी चीजें जो एक एनर्जी होती है, एक फैमिली बनती है, वो बनती आ रही है. 4-4.5 महीने से हम रिहर्सल्स कर रहे हैं, पूरी टीम एक साथ. उसके पहले से सब इंडिविजुअली रिहर्सल्स कर रहे थे. तो वो कोऑर्डिनेशन, वो इन सिंक होना, ये सब बहुत जरूरी था. और सारी चीजों को जहन में लाना कि आपके डायलॉग्स क्या हैं, आपका इनर क्या चल रहा है, आप किस तरीके से उसको परसीव कर रहे हैं, आपका क्राफ्ट क्या बन रहा है कैरेक्टर का, आपके स्क्रिप्ट के पहले क्या अपने जहन में आपकी स्क्रिप्ट बन रही है, इसके बाद क्या बन रही है, जब आप ऑन स्टेज हैं तो आप क्या डायलॉग बोल रहे हैं, और जब ऑफ स्टेज है तो भी आपकी लाइफ की क्या स्टोरी चल रही है उस किरदार की. तो ये सारी जो डिटेल्स और न्यूएंसेस हैं, वो रिहर्सल्स के थ्रू बहुत काम आते हैं. व्हेन यू आर गिविंग एंड टेकिंग विद द को एक्टर, आई थिंक इट्स कमिंग आउट रियली ब्यूटीफुल. मतलब मैं ये चीज प्रॉमिस कर सकती हूँ कि जब मैं रोऊंगी तो लोग रोएंगे, जब मैं हंसूंगी तो लोग हंसेंगे. When I fall in love, they will fall in love. So I'm really looking forward to give these emotions and take these emotions from the audience sitting and watching me. Um,
क्योंकि मुझे लगता है जितनी भी ऑडियंस है जो मुझे देख रही है वो सब मेरी है, दे आर माइन, आई ओन एवरी फीलिंग ऑफ theirs because I'm giving that the feeling to them, and I expect and I am receiving those feelings from them. So I cannot thank God enough कि ऊपर वाले ने जो भी जिस भी वक्त में मुझे ये आशीर्वाद दिया होगा, उस हर चीज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरी one who's made this happen for me. That's amazing. That's lovely. You know, when you talk about audience, then how can I not mention Bollywood? You paved your path, and then in 2005 you made your debut with Correct, Garam Masala. So, you know, that film itself, it had a very huge star-studded cast. Akshay Kumar, correct. John Ibrahim, Paresh Rawalji. That, you know, is there something you learned, or is there something that somebody gave you as a tip? And if someone gave you as a tip, then who is it? Which you now follow for everything. Like, let's say picking up a script or something like that. See, I've learned a lot from Paresh Rawal, sir. I've done 6 films with him. I have realized that there's a switch on and switch off with him. You know, he is a very different person when he's in person. He is very normal, simple, very, you know, uh, down to earth, but very intelligent at the same time, very well educated. और बहुत ही मिलनसार, एकदम घर के जैसे हैं. मतलब so that teaches me to be very, very humble, normal, down to earth, no matter how many projects you are doing. I've learned one thing from him is attitude is in your work, not in yourself. So वो बहुत बड़ी बात जो मैंने परेश रावल से इस तरह से सीखी है. Second, I personally feel that Akshay sir is a person who's always very disciplined towards what he does. There's a sense of responsibility towards the producers, towards the project he has, and being around him has made me feel that I am, I'm a part of the project. I'm not the project. And you have to be disciplined and you have to be focusing on what you are given and why you're standing and what you're standing there for. So I think these two people played a very, very important role in the first film when I was working because I was a little kid when I came in this industry. Everybody knows that. Like a facha from 12th standard pass karte, I was looking for, so my brothers and me, and we've all um, literally sponsored our own education also. We had decided that we will never take a single penny after 10th standard from our parents, and we did not. So we worked our way up. We worked very hard. Today I'm well educated, a master's and MA, and I've been like really craved to educate myself. So all these things keeps me grounded to you know keep going ahead. So learned a lot. Mr. Bachchan is another one who's a perfectionist, respecting time, respecting yourself first is what I've learned from Mr. Bachchan. Actually, a lot of them from people I've worked from 30, I've worked with 13 national award directors, starting from Priyadarshan sir, Madhur Bhandakar sir, Dibakar Banerjee sir, Ram Gopal Verma, Anis Bazmi, and Shekhar Kamula, Vikram, Tiru, you name it. And luckily I've been really fortunate to work globally also, a Greek film and a Hollywood film. So ये बहुत सारी छोटी 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 चीजें हैं जो मिल मिल के तुम वो पर्सन बनते हो जो तुम आज यहाँ पे. You know, you mentioned Hollywood. So we have post Garam Masala, we have seen you in films like Oye Lucky Lucky Oye or in Run. And then there was a transition to Hollywood. And all of us were very happy to see you there on the big screens. You know, I remember Priyanka Chopra's statement that once she said that it's very hard. It takes you decades to step, like, you know, put your feet into that industry, into Hollywood industry. I wanted to ask you, is it so? Like, is it that hard to make a mark over there? Yeah, it is very hard to make a mark anywhere. Why only there? Even in Bollywood, जब ये अपनी जगह है और यहाँ पर मार्क बनाने में इतना टाइम लग जाता है, तो वो तो अपनी जगह भी नहीं है. तो मार्क लगा बनाने में कितना वक्त लग जाएगा? ना आपकी भाषा है, ना आपके लोग हैं, ना आपकी जान पहचान है.
वहां आपको झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना बनाना खुद ही सब करना पड़ेगा। आगे पैसा होने के बावजूद आप किसी को हायर नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो वहां क्यों, हर जगह। और इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू इवन स्टैंड ऑन माई फीट इन बॉलीवुड। हम्म। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो एक आपने रियलाइज किया होगा 2009-10 के बाद मेरे जो वर्क का स्पीड था वो कम हो गया। हम्म। एक लेवल तक तो मैंने काम किया, उसके बाद मैं थिएटर करने लगी, फिर मैं तमिल फिल्म करने लगी, फिर तेलुगु करने लगी, फिर मैं प्रोड्यूस करने लगी, मैं थिएटर करने लगी। तो आई थिंक बहुत बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट इजी, इट टुक मी कितना टाइम लगे। आप देख लिए 16-17 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी। फिर भी बहुत बार मैं जब भी कोई फिल्म करती हूँ तो मुझे लगता है मेरा पहला प्रोजेक्ट है, क्योंकि उतनी शिद्दत से करनी पड़ती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड शी इज राइट, पीसी इज टोटली राइट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू। एक डेकेड लग जाता है मुझे, मेरा सेकंड डेकेड जो 3 साल 4 साल में खत्म हो, मतलब पूरा हो जाएगा इस इंडस्ट्री में आने का, इस करियर में आने का। और थैंकफुली व्हेन यू स्टार्ट यंग एंड व्हेन यू आर लिटिल बच्चा, व्हेन यू स्टार्ट देन यू फील दैट यू हैव लिटरली लर्नड, एंड नाउ अब टाइम आया कि अब नाउ यू नो गेट मी everything, all the scripts and everything which I deserve or which you want me to do, and I will put my heart and soul to justify that role. So राइट। बहुत टाइम लग जाता है, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तुम्हारा कोई पास कोई खड़ा नहीं है, बहुत टाइम। आज भी मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कितनी अकेले भी इतने बड़े प्रोजेक्ट को कर रही हूँ, फिर भी मैं कितनी अकेली हूँ ये करने के लिए, बिकॉज बहुत जान लग जाती है, बहुत जान लग जाती है, और कोई नहीं खड़ा होता आपके साथ। You know, you did Bollywood, you did Hollywood, and then regional cinemas also. I want to ask you where your heart lies, and क्या एक कोई specific ऐसा reason जो आप किसी चीज को you'll give a priority or maybe a point one to that particular area? माई हार्ट लाइज इन एक्टिंग, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। मुझे एज ए किरदार, मुझे एक्टिंग करने में बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है मैं एक ही जन्म में बहुत सारे जन्मों को जी रही हूँ, बहुत सारे इंसानों को जी रही हूँ। हम्म। अ, कभी मैं कभी जर्नलिस्ट का रोल कर रही हूँ, कभी मैं जर्नलिस्ट का रोल कर रही हूँ, कभी न्यूली वेड कपल का कर रही हूँ, कभी पुलिस का रोल कर रही हूँ, कभी एक मुस्लिम लड़की का रोल कर रही हूँ, कभी एयर होस्टेस का रोल कर रही हूँ, या कॉलेज लड़की का। आई थिंक कितनी खूबसूरत बात है कि आप एक ही जिस्म में, एक ही जिंदगी में आप हम्म। इतनी सारी जिंदगी जी पा रहे हैं। तो माय माय हार्ट एंड माय हैप्पीनेस लाइज इन एक्टिंग, अब वो किसी भी माध्यम से हो सकता That's lovely. Coming to martial arts, आप जैसे I just mentioned that you are just not an actor. आप सिर्फ एक कलाकार नहीं है, but then there are different hats you wore, like you've had. है। So I want to know कि martial arts is something you would not really find in actresses, like they'd be going for that. And having said that, you're a black belt. तो ये जर्नी कैसे रही? आई वॉज एट स्कूल एंड माई मदर, छोटे बच्चों को क्या पता है किस में जाना है। इट्स ऑलवेज द पेरेंट्स आर द क्रेडिट ऑफ वट एवर मार्शल आर्ट्स एंड India representation. And today, even a Hollywood film I got because I'm a martial artist, and I do theater. I've been doing theater for such a long time. तो मुझे इसलिए भी शायद वो फिल्म मिल पाई क्योंकि आई वाज अ मार्शल आर्टिस्ट। ना क्रेडिट इज टोटली टू माय मदर। स्कूल में ही उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट्स में एनरोल करा दिया था, टाइक्वांडो में एनरोल करा दिया था। So all these strategies of aligning with life and doing everything today is, then the credit is to my mother and my parents and my family who always stood by me. And this industry mein khas kar, when you are a martial artist, there is a very funny saying. Somebody told me कि यार ये हीरोइन को मत साइन करो, ये मार्शल आर्टिस्ट है, कहीं सेट पे लड़ाई झगड़ा ना करने लगे। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज बिकॉज आई रियलाइज दैट such a big superstar, and just because of lack of that thought process and Mhm. education, he Right. said this, and I was like, what? Just because I'm a martial artist, I don't keep fighting and on the streets and roads. And just because I'm a Kathak dancer, doesn't mean that I'm going to be dancing every time you meet me. And one of the films was taken away from me because I'm a martial artist. Okay. One of the top films, one of the big films. And I didn't regret much because that film also didn't do well later. But at that point of time, I felt so helpless and so, and I've never told this to anyone ever. This is the first time I'm telling you that that film was just, I did not get that film because
of the fact that I was a martial artist. I am a martial artist and I'm very proud of it. Uh, but the main actor thought that अरे ये तो लड़ाकू है, कहीं ऐसा ना हो कि सेट पे लड़ने वड़ने लगे. And I was like, what is anything to do with what skills I knew? Right, And that skill today has got me a Hollywood film. right. So thank you. That's great. You know, given the fact that you're a black belt in Taekwondo, uh, what do you think in today's era, especially, martial art holds a very important role for a woman because of the crime which is, going up in numbers against women. What do you think? I will tell you something. I think it's not about women only. I think men and women both have to learn martial arts because it's not sheer physical need. It is also a very, uh, it gives you a lot of mental strength to stand in front of the world, to face the world, to represent yourself in front of the world, the confidence you have, the perseverance you have. It is all, it all comes from the training of any kind. It's not necessarily just a taekwondo. I am a taekwondo trained, but there would be karate, jujutsu. You train yourself in any kind of martial arts, and you must. Not only, as I said, not only for women, for men as well. That's very insightful. That's really lovely. So, Neetu, you've been an inspiration to many, and we really hope to see the good work you're doing. And Thank with you. that, we'll wrap the session. It was a lovely conversation with you. Thank you so much for being Likewise. guest. थैंक यू सो मच. सबको बहुत शुक्रिया, आदाब. आप लोग प्लीज 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 उमराव जान जरूर देखिए. बहुत मेहनत की है हम लोगों ने.